Hello everyone, welcome back to Antil Biology Tutorial. I am your friend Sandeep Antil and today we are going to discuss about how enzymes works and classification of enzymes. हमने हमारे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि enzymes are biocatalysts that increase rate of chemical reaction by decreasing activation energy. और आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एंजाइम्स इस एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। एंजाइम का एक स्पेसिफिक रीजन होता है जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइट, और जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड करता है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स थ्रू मल्टीपल वीक नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स और रिवर्सिबल कोवलेंट बॉन्ड। अगर नॉन कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो हम जैसे कि हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। And because of these interactions, some amount of free energy is released, और इस free energy को हम binding energy कहते हैं, और enzymes यूज करते हैं इस binding energy को to decrease activation energy. And this binding between enzyme and substrate are highly specific. There are two models that explain enzyme and substrate binding. First, lock and key model and second, induced fit model. Lock and key model proposed by Emil Fischer in 1894. According to this model, enzymes and substrate are structurally complementary. Means according to Fischer, enzymes act like a lock and substrate act like a key. जिस तरीके से एक लॉक में एक पर्टिकुलर की फिट होती है, उसी तरीके से इन एंजाइम एक पर्टिकुलर सबसेट फिट होगा जो कि उसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा. इंड्यूस्ड फिट मॉडल प्रपोज्ड बाय डैनियल कोसलैंड इन 1958. दिस मॉडल गिव्स इंपॉर्टेंस टू मॉलिक्यूलर कंपैटिबिलिटी. तो ये मॉलिक्यूलर कंपैटिबिलिटी है क्या? अकॉर्डिंग टू इंड्यूस्ड फिट मॉडल, जो सबस्ट्रेट है उसी एंजाइम पे बाइंड करेगा जिसकी एक्टिव साइट पे उसके कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल्स होंगे. फॉर एग्जांपल, अगर सबस्ट्रेट के पास एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है तो एंजाइम की एक्टिव साइट पे डोनर ग्रुप होना चाहिए. अगर सबस्ट्रेट के पास डोनर है तो एंजाइम की एक्टिव साइट पे एक्सेप्टर ग्रुप होना चाहिए. अगर सबस्ट्रेट पे एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है तो एंजाइम की एक्टिव साइट पे पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए. अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए. दिस इज मॉलिक्यूलर कंपैटिबिलिटी. तो सबस्ट्रेट उसी एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा जिसकी एक्टिव साइट पे उसके कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल्स होंगे. सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट आर नॉट स्ट्रक्चरली कॉम्प्लीमेंट्री एंड बाइंडिंग बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट डिपेंड्स ऑन देयर मॉलिक्यूलर compatibility. After their binding, substrate induce a conformational change in enzymes and enzyme induce a conformational change in substrate. और इन conformational changes की वजह से जो enzymes and substrate है वे एक दूसरे के structurally complementary बन जाते हैं. So in case of lock and key models, enzyme and substrate are structurally complementary. But in case of induced fit model, they are not structurally complementary. After enzyme and substrate binding, they become structurally complementary. And induced fit model is the most accepted model. Most accepted. When a substrate bind on the active site of enzymes, they form an enzyme-substrate complex. और उसके बाद जो एंजाइम है वो कन्वर्ट कर देता है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में. सो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बट बिफोर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, एक स्टेज आती है जिसको कि हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं. एंड ट्रांजिशन स्टेट इज द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट एनर्जी इन विच ए रिएक्टेंट यानी कि सबस्ट्रेट आर पार्शियली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. एंड ड्यूरिंग द रिएक्शन an active site of enzyme stabilize this transition state. चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स. अकॉर्डिंग टू एंजाइम कमीशन, enzymes are classified into 6 broad classes based on their
activity and gives them EC number. Class 1 contain oxidoreductase and class 2 transferases, class 3 hydrolases, class 4 lyase, class 5 isomerases and class 6 contain ligases. And enzyme commission gives EC number to each class. EC number 1 gives to oxidoreductases and EC2 gives to transferases and EC3 number gives to hydrolases and EC4 gives to lyase and EC5 gives to isomerases and EC6 gives to ligases. Oxidoreductase are those enzymes that catalyze oxidation reduction reaction. This class contains enzymes, oxidases, dehydrogenases, oxygenases and peroxidases. Transferases are those enzymes which transfer functional group from one molecule to another molecule. For example, kinases transfer phosphate group and transcarboxylase transfer carboxyl group. Transaminase transfer amine groups and phosphorylase transfer inorganic pyrophosphate from one molecule to another. And third one is hydrolases. Hydrolases are those enzymes that catalyze the reaction in which bonds are broken in presence of water. For example, phosphodiestases. Phosphodiestases break phosphodiester bond in presence of water. And phosphatase remove phosphate group and peptidase remove peptide bond in presence of water. And fourth class is the lyase. Lyase are those enzymes that catalyze the reaction in which bonds are broken in absence of water. For example, aldolase, dehydratase and decarboxylase. And synthase. Synthase is the exception of this class because synthase do not break any type of bond. It forms the bond in absence of ATP. And fifth one, isomerases. Isomerases are those enzymes that catalyze the reaction in which one isomeric form is converted into another isomeric form या फिर intramolecular rearrangement. For examples, mutase, cis trans isomerase, epimerase and racemerases. And last class is the ligase. Ligase are those enzymes that catalyze the reaction in which bonds are formed by using ATP. Ligase include carboxylase and synthetase. तो यहाँ पर देखिए दो एंजाइम, एक है सिंथेज एंजाइम और एक है सिंथेटेज एंजाइम. तो चलिए हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं कि क्या डिफरेंस है. फर्स्ट एंजाइम हमारा सिंथेज एंजाइम. सिंथेज आर लाइएज एंजाइम, दे फॉर्म बॉन्ड विदाउट यूजिंग एनर्जी. And synthetase are ligase enzyme, they form bond by using energy such as ATP and